1. Indomitable, adjective. Munzor, nakabil control, bekabu. Impossible to subdue or defeat. 2. Bastion, noun. Gar, kala, bulj. An institution, place, or person strongly maintaining particular principles, attitudes, or activities. 3. Ominous, adjective. Manhus, badnam. Giving the worrying impression that something bad is going to happen, threateningly inauspicious. 4. Lackluster, adjective. Bejosh o khurush, walwale se khali. Lacking in vitality, force, or conviction, uninspired or uninspiring. 5. Reckoning, noun. Hisab kitab karne ka amal, ginti, shumar. The action or process of calculating or estimating something. 6. Onslaught, noun. Dhawa bol dena, hamla karna. A fierce or destructive attack. 7. Warp, verb. Tol marol kar pesh karna, morna. Make or become bent or twisted out of shape, typically as a result of the effects of heat or damp. 8. Heir, noun. Waris. A person legally entitled to the property or rank of another on that person's death. 9. Charisma, noun. Girai, krishma. Compelling attractiveness or charm that can inspire devotion in others. 10. Credential, noun. Tasdeeq nama, sanad, कागजात जो हकीकत की तस्दीक करे. A qualification, achievement, quality, or aspect of a person's background, especially when used to indicate their suitability for something. 11. Revival, noun. हयात नौ, ताज़ा होने का अमल, अहिया, नई रूह. An improvement in the condition, strength, or fortunes of someone or something. 12. Entrenched, adjective. मोर्चा बंद, कलाबंदी. Of an attitude, habit, or belief, firmly established and difficult or unlikely to change, ingrained. 13. Fortunate, adjective. मुबारक, खुश किस्मत, नेक नसीब. Favored by or involving good luck, lucky. 14. Dubious, adjective. मशकूक, मुबहम. Hesitating or doubting. 15. Formidable, adjective. डराना, खौफनाक, हौलनाक. Inspiring fear or respect through being impressively large, powerful, intense, or capable. Just a year ago, the party looked indomitable. That is no more the case. The party of the Sharifs, which dominated the country's political scene for more than 3 decades, is now struggling to keep its foothold even in its bastion. With the Punjab Assembly elections just months away, the PML N is facing its biggest electoral challenge. The humiliation the party suffered in the by-elections in the province some months ago is an ominous sign. The prospect appears even bleaker with a lackluster PML N-led coalition government in Islamabad presiding over a possible economic collapse. It is the hour of reckoning for a party that has, over the years, been reduced to a family enterprise. It has long lost its status of being a national party, and now its provincial fortress is under siege by a rampaging populist force led by former Prime Minister Imran Khan. It is becoming increasingly apparent that the party, with its top leader living in self-exile in London, seems to have lost its bearings in the fast-changing political and social dynamics of the country, particularly in Punjab. The Sharifs are now struggling to build an effective narrative to counter the PTI onslaught that has eroded the PMLN's support base, particularly among the young generation and the urban middle classes looking for a change in the status quo. With just about 3 months left for the critical Punjab elections to be held, time is running out for the party, which still seems to be living in a time warp. The tightening of dynastical control has hampered the party's outreach as well as the induction of new blood in the leadership. It is all in the family, with Nawaz Sharif as the potentate and the younger brother as Prime Minister of the country and party president. It is becoming increasingly apparent that the party has lost its bearings.
It doesn't end there. The other top party positions are held by the new generation of the Sharif family. The very optics of Shahbaz Sharif being the Prime Minister and son Hamza the Punjab Chief Minister, though briefly, demonstrated the family's stranglehold over the party that is supposed to stand for democracy. One wonders why one of the most powerful political forces in the country does not have any other person in its ranks to lead the party in the province. Being elevated to the position of chief organizer and senior vice president, Maryam Nawaz has now formally been declared heir apparent. It is true that she had long been projected as the candidate for the top party position, and was ultimately meant to succeed her father. It is also true that she has mobilized the party over the last few years, after her father's ouster from government in 2017. Her powerful oratory and charisma have certainly won her mass appeal. But the latest announcement about Maryam Nawaz's further scaling the ladder in the PML N hierarchy has reportedly raised eyebrows among senior party leaders, many of whom have been associated with the party for more than 3 decades and have held important government positions. But reportedly, they hardly have a say in key party decisions. Yet another example of the party turning into a Sharif family enterprise is that Maryam's husband, 59-year-old retired Captain Muhammad Safdar, who is also a member of the National Assembly, heads the party's youth wing. It can't get more ironical. How can the party expect to reach the younger generation with such an image? Of course, it is not only about his age, but also his retrogressive political views. Known for his obscurantist and extreme religious opinions, his only credential is his position as son-in-law of Nawaz Sharif. It is not the younger Sharif, the Prime Minister, but the elder Sharif who has the final say regarding key policy decisions. One such example was the decision by Nawaz Sharif to have Ishaq Dar appointed as finance minister. Another close family member, Dar is certainly more trusted than the outsider but far more capable Miftah Ismail, who was unceremoniously removed within months of his appointment as finance minister. An economist, unlike Dar the accountant, the former finance minister had taken some hard but necessary decisions to prevent the country from defaulting, but curiously, he was replaced soon after the revival of the IMF bailout package. Predictably, Dar reversed a number of economic and financial measures taken by his predecessor, with disastrous results that have pushed the country back on the path to default. The worsening state of the economy has further eroded the PMLN's prospects in the coming elections. It may be true that most political parties in the country have turned into family enterprises, with no internal democracy. But the dynastical control in the PMLN is far more deeply entrenched, with no outsider getting into the inner circle. Over the last few years, the party has effectively been run from London. Surely, Nawaz Sharif, a 3-time Prime Minister, has experienced many trials and tribulations in his political career spanning some 4 decades. He has been ousted on all 3 occasions halfway through his term in office because of direct or indirect military interventions. In the past, Nawaz Sharif returned to power each time with a much larger electoral mandate. However, he will not be that fortunate this time as he has been convicted and disqualified from holding public office through a dubious and controversial court judgment. There seems little likelihood of his returning to the country and running the party's election campaign. In his absence, his daughter will be spearheading the PMLN electioneering. But the real issue for the party would be how to regain its lost political capital in Punjab in the face of a formidable opposition. According to media reports, the party has decided to fight elections on the narrative related to Nawaz Sharif's victimization by the security establishment and the judiciary. With Imran Khan also going to the polls on the wings of his own anti-establishment narrative, it will be hard for the PMLN to rally public support. It would become much more difficult for the party going to the hustings without fresh ideas or a concrete program that could help it win back the support of its erstwhile political power base. It is, indeed, the hour of reckoning for the House of Sharif. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, January 25, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary
सिर्फ 1 साल पहले पार्टी नाकाबिल तस्खीर लग रही थी। अब ये मामला नहीं है। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक मुल्क के सियासी मंजरनामे पर छाए रहने वाली शरीफ खानदान की जमात अब अपने गढ़ में भी अपने कदम जमाने के लिए जिदोजहद कर रही है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात में चंद माह बाकी रह गए हैं और मुस्लिम लीग नून को अपने सबसे बड़े इंतखाबी चैलेंज का सामना है। चंद माह कबल सूबे में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को जिस जिल्लत का सामना करना पड़ा वो एक मनहूस अलामत है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत की नाकामी की वजह से ये इम्कान और भी तारीख दिखाई देता है। ये एक ऐसी पार्टी के लिए हिसाब किताब का वक्त है जो बरसों से ख़ानदानी कारोबार में तब्दील हो चुकी है। ये एक तवील अरसे से एक कौमी जमात की हैसियत खो चुकी है और अब इसके सूबाई कले का मुहासरा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में एक बढ़ती हुई अवामियत पसंद क़ुव्वत ने किया हुआ है। ये बात रोज़ बरोज़ वाज़े होती जा रही है कि लंदन में खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी बसर करने वाली पार्टी मुक़बिल ख़ुसूस पंजाब की तेज़ी से बदलती हुई सियासी और समाजी हरकियात में अपना असर खो चुकी है। शरीफ ख़ानदान अब PTI के हमले का मुकाबला करने के लिए एक मुअस्सर बयानिया तैयार करने के लिए जिदोजहद कर रहा है, जिसने मुस्लिम लीग नून की हिमायत की बुनियाद को ख़त्म कर दिया है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल और शहरी मुतवस्सित तबके में जो स्टेटस को में तब्दीली के ख्वाह हैं। पंजाब के अहम इंतखाबात में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं और पार्टी के लिए वक्त ख़त्म होता जा रहा है, जो अब भी वक्त के तातुल में ज़िंदगी बसर करती दिखाई दे रही है। मौरूसी कंट्रोल को सख्त करने से पार्टी की रसाई में रुकावट पैदा हुई है और साथ ही क़यादत में नए खून की शमूलियत भी मुतासिर हुई है। ये सब ख़ानदान में है। नवाज शरीफ ताकतवर हैं और छोटे भाई मुल्क के वज़ीर आज़म और पार्टी सदर हैं। ये तेज़ी से वाज़े होता जा रहा है कि पार्टी ने अपना असर खो दिया है। ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है। पार्टी के दीगर आला ओहदों पर शरीफ ख़ानदान की नई नस्ल फाइज है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने गरचे मुख्तसर तौर पर इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस ख़ानदान का इस पार्टी पर गहरा असर और रसूख है जिसे जमहूरियत के लिए खड़ा होना चाहिए। हैरत होती है कि मुल्क की सबसे ताकतवर सियासी कुव्वतों में से एक के पास सूबे में पार्टी की क़यादत करने के लिए कोई दूसरा शख्स क्यों नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद मरियम नवाज को बाज़ाब्ता तौर पर वारिस करार दे दिया गया है। यह सच है कि उन्हें तवील अरसे से पार्टी के आला ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा था और आखिरकार उनका मकसद अपने वालिद की जगह लेना था। ये भी सच है कि 2017 में अपने वालिद की हुकूमत से बेदखल होने के बाद उन्होंने पिछले कुछ सालों में पार्टी को मुतहर्रिक किया है। इनकी ताकतवर तकरीर और करिश्मा ने यकीनी तौर पर उनकी अवामी मकबूलियत हासिल की है। लेकिन मरियम नवाज के मुस्लिम लीग नून की दर्जाबंदी में मजीद सीढ़ियां चढ़ने के ताज़ा तरीन ऐलान ने मुबैना तौर पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में भनवें खड़ी कर दी हैं, जिनमें से बहुत से 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से पार्टी से वाबस्ता हैं और अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज रहे हैं। लेकिन इत्तलात के मुताबिक पार्टी के अहम फैसलों में उनका कोई किरदार नहीं है। पार्टी के शरीफ खानदान में तब्दील होने की एक और मिसाल यह है कि मरियम नवाज के शौहर 59 साला रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर, जो कौमी असेंबली के रुकन भी हैं, पार्टी के यूथ विंग के सरबराह हैं। इससे ज्यादा सितम ज़रीफी नहीं हो सकती। पार्टी इस तरह की तस्वीर के साथ नौजवान नस्ल तक पहुंचने की तवक्को कैसे कर सकती है? यकीनन ये सिर्फ उनकी उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि उनके रजत पसंद सियासी नजरियात के बारे में भी है। अपनी हिट धर्मी और इंतहा पसंद मजहबी नजरियात की वजह से जाने जाने वाले उनकी वाहिद पहचान नवाज शरीफ के दामाद की हैसियत से उनका मकाम है। अहम पॉलिसी फैसलों के बारे में हतमी फैसला छोटे शरीफ वजीर आज़म नहीं बल्कि बड़े शरीफ का है। इसकी एक मिसाल नवाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने का फैसला था। खानदान के एक और करीबी रुकन इसहाक डार यकीनी तौर पर बैरूनी शख्स से ज्यादा काबिल एतमाद हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा काबिल मिफ्ता इस्माइल हैं, जिन्हें वजीर खजाना की हैसियत से तकर्री के चंद माह के अंदर ही गैर रस्मी तौर पर हटा दिया गया था। इसहाक डार के बरक्स साबिक वजीर खजाना ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से रोकने के लिए कुछ सख्त लेकिन जरूरी फैसले किए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि IMF बेल आउट पैकेज की बहाली के फौरन बाद उन्हें तब्दील कर दिया गया। मुतवक्के तौर पर
डार ने अपने पेशरों की तरफ से उठाए गए मुतअद्दिद माशी और मालियाती इक़दामात को वापस ले लिया, जिसके तबाकुन नताइज सामने आए, जिसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की राह पर वापस धकेल दिया। मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के इम्कानात को मजीद कमज़ोर कर दिया है। ये सच हो सकता है कि मुल्क की ज़्यादातर सियासी पार्टियां ख़ानदानी कारोबार में तब्दील हो चुकी हैं, जिनमें दाखिली जमहूरियत नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून में मौरूसी कंट्रोल कहीं ज़्यादा गहरा है और कोई भी बैरूनी शख्स अंदरूनी दायरे में नहीं आ रहा है। पिछले कुछ सालों में पार्टी को मुअस्सर तरीके से लंदन से चलाया गया है। यकीनी तौर पर 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित अपने सियासी करियर में कई आजमाइशों और मसाइब का सामना करना पड़ा है। बराह रास्त बिलवास्ता फौजी मुदाखलत की वजह से उन्हें अपनी मुद्दत सदारत के निस्फ हिस्से में तीनों मौके पर बरतरफ किया गया है। माजी में नवाज शरीफ हर बार बहुत बड़े इंतखाबी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में वापस आए, ताहम वो इस बार इतने खुश किस्मत नहीं होंगे क्योंकि उन्हें एक मशकूक और मुतनाज़ा अदालती फैसले के जरिए अवामी ओहदे पर फाइज होने के लिए मुजरिम करार दिया गया है और नाअहल करार दिया गया है। इनकी वतन वापसी और पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के इम्कानात बहुत कम हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी साहिबजादी मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगी, लेकिन पार्टी के लिए असल मसला ये होगा कि एक मजबूत अपोजिशन के सामने पंजाब में अपना खोया हुआ सियासी सरमाया कैसे हासिल किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जानिब से नवाज शरीफ को निशाना बनाने से मुताल्लिक बयानिए पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। चूंकि इमरान खान भी अपने ही इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लिए अवामी हिमायत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। नए ख्यालात ठोस प्रोग्राम के बगैर पार्टी के लिए इंतखाबात में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे इसे अपनी साबिका सियासी ताकत की हिमायत हासिल करने में मदद मिल सके। यकीनन ये शरीफ ख़ानदान के लिए हिसाब की घड़ी है। मज़मून निगार मुसन्निफ और सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 25 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.